हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट की ड्यूटीज जो टुवर्ड्स वुमेन, चिल्ड्रन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स प्रैक्टिस की जाती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ड्यूटीज स्टेट फॉलो आउट करती है जिससे कि वुमेन, चिल्ड्रन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड प्रिवेंट फ्रॉम द वायलेंस दैट टू बी प्रैक्टिस अगेंस्ट देम। सो लेट्स बिगिन। The state, that is the executive, the legislature and the judiciary and their agents, has a continuous responsibility not only to uphold the right of these groups to be free of violence but a duty to prevent and eliminate violence against them. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं की गई है, उसके साथ साथ उनको एम्पावर करने की भी बात की गई है जिससे कि स्टेट अडॉप्ट करें वो मेजर्स जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो इन फेवर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जिससे कि वो अपना सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन और पॉलिटिकल एडवांटेज enhance कर सके as they face disadvantages in the socio-economic, education and political field that should not be faced by them. Fundamental rights जो होते हैं that is a part of our constitution ensure कि equality before the law हो, equal protection की जाए इन groups की, discrimination ना हो on the ground of any reason and equal opportunity मिले to all citizens in matters relating to employment. So Articles 14 to 42 of the Constitution are of specific importance in this regard. So the oldest and the simplest justification for government is कि protecting from violence, citizens को protect करना और government to provide the safety of law and order जिससे कि citizens को protect कर सकें from each other and from foreign foes. जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है स्टेट की वो इज टू इंश्योर कि इफेक्टिवनेस ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड ह्यूमन राइट्स की प्रैक्टिस हो and the right to work, right to be protected against unemployment, ensured on the part of the state and society by such measures as would provide wide possibilities for all to participate in useful work and as would prevent unemployment. There are 6 goals जो स्टेट फॉलो आउट करता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. दे आर एज फॉलोज कि establish a justice in order to have a fair and impartial justice system to ensure equality before the law. Second, form a union. कैसे maintain करना है order and liberty in order to strengthen and provide enough power to the government to carry out listed codes. Third, domestic tranquility. It makes sure कि जो new rules and punishments हैं that should provide an environment of law and order to preserve physical security for citizens and their property. Common defense makes sure कि union protect its citizen from invasion and threats, military, political and economic through creation of a national military force. General welfare, social, political, economic prosperity को promote किया जाए for the entire nation. Secure liberty, individual liberty को maintain किया जाए against excessive government intrusion. Duties of state. Now here we will talk on the specific duties that a state follow out in order to protect women, children and marginalized group. State will treat you equally to other citizens as Article 14 में कहा गया है, that is a part of our constitution. State will not discriminate any citizen on grounds of any of these. ये आर्टिकल 51 में बताया गया है. स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, आर्टिकल 15(3) बताता है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, आर्टिकल 16 प्रोक्लेम अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. स्टेट डायरेक्ट करता है पॉलिसी टूवर्ड सिक्योरिंग फॉर वुमेन एंड वुमेन इक्वली कि दे हैव अ राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. आर्टिकल 39A, इट इज अ पार्ट ऑफ DPSP. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये आर्टिकल 39D में कहा गया है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ DPSP. टू प्रमोट जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्री लीगल एड हो, सुटेबल लेजिस्लेशन हो, सिक्योर जस्टिस
are denied to any citizen by reason of economic or other disabilities, ये आर्टिकल 39A में प्रोवाइड किया गया है that they have a right to assess all these kind of opportunities and facilities. The state to make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief, Article 42. So these all are the state duties जो हमारे DPSP में बताया गया. That is direct principle of state policy. These are the state policy that is to be conduct in order to protect and prevent violation. स्टेट प्रमोट करता है स्पेशल केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन. आर्टिकल 46 में कहा गया है. 47 टॉक्स अबाउट द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन शुड बी रेज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल. ये भी स्टेट की ड्यूटी है. एंड इट विल प्रोटेक्ट योर राइट्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ एज लॉन्ग एज यू डू नॉट पुट अदर्स इन डेंजर. इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट योर राइट टू वर्शिप. जिस तरीके से आप जो भी रिलीजन वर्शिप करना चाहते हैं, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट these kind of rights also, and protect your rights if you are accused of a crime, providing a fair and equitable judicial process. It will protect your right to vote for individual to represent you in the government. The right to run for elected office is also a duty of the state to be conduct in such a manner that you get fair platform, equal treatment. It will protect your freedom to live your life and maintain your liberty and individualism as long as you do not put others in danger. It will protect your right to pursue what makes you happy as long as your actions do not infringe on the rights of others. These all are the duties of the state towards women, children, marginalized group of all citizens. So state provide करता है social security that enables women, children and marginalized group and all citizens to create their own economic security. So जो state duties हैं, they are in order to provide social security जिससे कि आप अपनी economic security को create कर सकें. Future of the government builds on these foundations of protecting and providing. Government will continue to provide public goods at a level necessary to ensure a globally competitive economic and a well-functioning society. जो 14th Amendment है, that requires state first duty कि protect किया जाए citizens को from private violence. Accountable duties of state towards them are as कि promote की जाए democracy and social justice, promotion of economic development हो, maintenance of external relations, policing to keep citizens safe is a key government duty of the state. So this was all about the duties of the state towards its citizens. Thank you so much for watching this video.